Mr. Upadhyay, the criticisms which are coming in from, say, the SP, the Congress and the AUDF is that this is yet another attempt to divide the people, and you are encroaching on the personal rights or the religious rights of a specific community. Your response to that? The people, firstly, I would like to thank CNN for accommodating me in your show. Secondly, first of all, these people who are accusing Bharatiya Janata Party for dividing the nation, they should first know that they have been dividing the country for last 75 years. Repeatedly, the Supreme Court, in several judgments, tens of judgments are there, where Supreme Court also advising government to bring uniform civil code. But we are not talking about a uniform civil code. We are talking about child right. The government under the leadership of Dr. Himanta Biswa Sarma take a right decision, because in Assam, infant mortality rate is higher than national average. Secondly, maternal mortality rate also is a matter of concern. So if you allow to child marriage, then these kind of things will keep happening. That is why Dr. Himanta Biswa Sarma and Bharatiya Janata Party government has decided there should not be any discrimination towards Muslim child, Muslim mothers. So to uniform to all these acts, to make a uniformity with the Hindu people or other people, this act has been repealed. Now, if you go to the Section 8, Section 9, Section 10 of Muslim Marriage and Divorce Registration Act, you see there is provision for minor marriage. But subsequently in 2006, there is an act which prohibits child marriage, and child marriage is Section 2A. If you go, the child male has not completed his 20 years of age, and if female, then it should not be below the 18 years. But if you see in Section 8 of this act, they have provided if the application before the registration at a marriage by the parties to the marriage jointly provided, if bride or both be minors, application shall be made. So there is a provision for minor marriage. So we cannot remain a silent spectator. Okay. So government has to see all those things. So that is why our government has decided to repeal this Muslim Marriage and Registration Divorce Registration Act. And all the people in the state should come under special marriage. Mr. Upadhyay, I'm just going to come back to you. Mr. Islam, I really want to know from you that why should one be suspicious? I mean, at the end of the day, if it's going to improve the social structure, if it's going to avoid child marriages, as the government is claiming this decision will, then don't you think this is something which should be appreciated and lauded? Why should you see this as an interference into your religious beliefs? It's totally interference in Muslim personal law, and my BJP leader who is speaking about this, that the act is repealed for child marriage. For his kind information and for kind information to BJP government, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चाइल्ड मैरिज को ना हो इसीलिए इस एक्ट था। जो काजी मैरिज करता था या डिवोर्स करता था, अगर कोई लड़का लड़की काजी के पास जाता है शादी करने के लिए, तो काजी उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंट पहले वेरीफाई करता है कि ये एज पर इंडियन लॉ ये 18 इयर्स और 21 इयर्स हुआ कि नहीं लड़का लड़की, उसके बाद ही वो मैरिज करता था। बीजेपी का प्रतिनिधि क्या बोल रहा है मेरे को पता नहीं है। और दूसरी बात, मुसलमान को शादी करने के लिए कोई एग्रीमेंट का जरूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन का जरूरत है नहीं है। शादी मुसलमान में होता है एक कॉन्ट्रैक्ट, इसमें प्रपोजल और एक्सेप्ट। काजी का रोल उसमें यह होता है कि जो शादियां होता है वो प्रॉपर वे हुआ कि नहीं है, एज पर शरीयत एंड एज पर इंडियन लॉ, इस हिसाब से हुआ कि नहीं। काजी के साथ दो वकील भी रहता है,
वो मतलब उसको विटनेस बोलता है, वो भी इसको इंश्योर करता है कि ये एज पर लॉ, एज पर शरीयत हुआ ही कि नहीं। दूसरी बात, ये जो एक्ट था 1935 मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, इस एक्ट ने जो लड़के के साथ शादी करता है उसका टोटल लाइफ एंड प्रॉपर्टी का गारंटी था। बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया है। लॉजिक क्या दिया है? सबसे वीक लॉजिक दिया है कि ये चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा देते हैं। अरे साहब जी, ये चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा नहीं देते थे, ये चाइल्ड मैरिज ना हो इसीलिए ये एक्ट और ये काजी था। ओके, अभी आप लोग इसको ले जाके डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऊपर थोप दिए हैं। मतलब वो जो रजिस्ट्रार है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऑफिस में, वो देखेगा। मेरे को आप एक बात बताइए, मुस्लिम मैरिज का जो कायदा कानून तौर तरीका, वो उस रजिस्ट्रार को क्या पता है? दूसरी तीसरी बात यह है, ये देश सेकुलर कंट्री है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपका राइट है, आर्टिकल 25 आपको राइट्स दिया है रिलीजियस फ्रीडम के बारे में। अभी कोई रिलीजन आपका अपना शादी का तौर तरीका क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तय करेगा, वो तय करेगा। ये देश है, ये देश डाइवर्सिटी का देश है। ये यूसीसी के बात बोल रहे हैं ना, बोले यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए सबको। अगर सब में यूनिफॉर्मिटी होना है तो आप लोग क्यों बोल रहे हैं असम में यूसीसी अगर लागू करेंगे तो यहां से ट्राइबल लोग को हम छोड़ देंगे, यहां से उस लोग को हम बाहर रखेंगे? अगर इनको बाहर ही रखना है तो यूनिफॉर्मिटी कहां है? Okay. और इस देश में जब 22 लॉ कमीशन ने क्लियर, I'll just come back to you. I'll just have to get in my other two guests as well. I'm going to go straight across to Mr. Jeherul Nigam. Mr. Nigam, even in the case of Uttarakhand, when the UCC was implemented, that there was a concern which was raised, say, among the tribal community and the Adivasis, who said that we have special, say, for example, property rights. We have some special rights that we enjoy. A UCC cannot address our special concerns. Do you think the point which is being raised by Mr. Islam is to a very great extent actually correct and genuine? I mean, how do you reassure them? Perhaps UCC is not the way to reassure them that this is going to be inclusive.